पूछ नहीं सकते क्या? मनीष 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 तिवारी जी ने कहा कि चूंकि मैं यील्ड किया था इसलिए आप भी यील्ड करें, तो अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दी है। आपका धन्यवाद। I did not give credit to Nehru ji. I gave discredit to you for having contradicted Nehru ji. I was saying you were contradicting a rule which I have incorporated in the bill from the 1962 bill of the Nehru government. So I was not giving credit to Nehru, I was giving discredit to you for having forgotten Nehru. So having clarified myself politically for the benefit of both of us, इसलिए वो आपके लिए भी वो ठीक रहेगा। वो आप अच्छा। Now, as far as the supplier is concerned, the supplier's responsibility will lie with the operator. It is not that he is going to get scored. Operator is free to have a written agreement with the supplier. Otherwise, जैसे निशिकांत जी ने कहा कि supplier is a very wide definition. उसका नतीजा क्या हो रहा था कि everybody was hesitant to come forward. Like for example, आपका अगर कोट खराब हो गया तो जो कोट स्टिच करने वाला है वो कहता है साहब ये बटन का कसूर था, तो बटन सप्लाई करने वाले को लाओ। वो कहता नहीं साहब ये बटन तो ठीक था, जिस धागे से लगाया धागे का कसूर था, तो धागे वाला लाओ। So this became an unending chain, resulting in a kind of a silent phobia among all the suppliers. And as rightly mentioned by Nishikant ji, last 10 decades we lost out on collaborations. तो वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन as far as the government is concerned, the government will be dealing only and only with the operator. Now let it rest with the operator to settle the rest of the thing. ओके। प्रश्न ये है कि रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सर। मैंने आपको अलाउ नहीं किया। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ।